जय जगन्नाथ जय श्रीराम। तो आज आम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन रो दैट इज पार्ट 4 आई थिंक तो डिस्कशन करबा। तो ता पूर्व टिके पिला खाली शेयर कर दवा सो दैट अलग पिला जॉइन हो जंतु इमीडिएटली हम स्टार्ट करें। ओके संस्थिता एंड तन्मयी तृप्ति शुभांशी अंकिता एमडी कौशर सोनालिसा एति कम पिला कौन तो 2 मिनट में स्टार्ट करिया ठीक अछि। यस गुड इवनिंग एवरीवन। तो ता पूर्व हमें टिके डिस्कशन कर दिया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कार दैट इज को फाइलम मानकर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हु कैन से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन व्हिच फाइलम मोलुस्का आर्थ्रोपोडा एनिलिडा कॉडाटा सिलिंडराटा टेनोफोरा व्हिच फाइलम possess open circulatory system open circulatory system किए मोलुस्का आर्थ्रोपोडा परफेक्ट ठीक अछि मोलुस्का एंड आर्थ्रोपोडा। देन मते को कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एलिनिडा एंड कॉडाटा परफेक्ट। तापरे को बेसिकली टिश्यू फ्लूइड रे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट अंक भितरु व्हिच वन इज absent in the tissue fluid RBC WBC ru कोटा absent as you know that in the tissue fluid RBC is absent clearly so that the color of tissue fluid is colorless or we can say that white in appearance. Next mate ko ki the fibrinogen which is the inactive form is converted to the active form fibrin by the kaha द्वारा fibrinogen टा fibrin को convert हुए thrombin prothrombin thromboplastin calcium which one is responsible directly for the conversion of a fibrinogen to fibrin or fibrinogen to fibrin whatever you can say. तो सुनी पालो क्वेश्चन yes thrombin. The next question prothrombin is get converted to the thrombin by the enzyme yes voice of Krishna perfect Rajalakshmi बढ़िया अछि को कि prothrombin is get converted to the thrombin by the enzyme thrombokinase right. तो थ्रोम्बोकाइनेज बा प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम जे कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन रे कन्वर्ट करिवो एंड थ्रोम्बिन टा फिब्रिनोजेन बा फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन रे कन्वर्ट करिवो बढ़िया अछि परफेक्ट। देन फॉर द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म व्हिच टू हार्मोन्स आर रेस्पोंसिबल अगेन आई एम सेइंग द क्वेश्चन फॉर द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द ब्लड एंड द बोन व्हिच टू हार्मोन्स आर रेस्पोंसिबल एंड ऑप्शंस आर adrenaline and thyroid and parathyroid adrenaline and thyroxine को which two hormones are responsible for the calcium metabolism in blood as well as bone thyrocalcitonin hormone which is released from the thyroid gland and also parathyroid hormone which is released from the parathyroid gland clear बढ़िया अछि ठीक अछि परफेक्ट ओके। देन तो आमे वर्तमान में जिबा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पूर्वरु को जिबा गोटे आज गोटे क्वेश्चन जो सॉल्व थिला एंड क्वेश्चन ता थिला एनडीए रो तो क्वेश्चन थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द लिवर and the first option was glucose is stored in the form of glycogen in the liver. Second option was liver is responsible for the production of urea and the third option was liver is important for the removal of the destruction RBC and the fourth option was liver is important for the absorption of waste particle and also absorption of excess water. Which of the following option is incorrect?
आउ थे क्वेश्चन पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट पचारछि ऑप्शन 1 थिला लिवर इज इंपोर्टेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन 100% ठीक आमे जानिछे लिवर इज द कॉस्टली ऑर्गन एंड आमे जहां भी ग्लूकोज इनटेक करे द ग्लूकोज वी आर intaking in your daily life or we can say that if someone is taking lots of glucose then the glucose will store in the form of glycogen in the liver clear तो लिवर को आम गोटे स्टोरिंग ऑर्गन बोली कहि परिया काहे ना ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन फॉर्म रे स्टोर करछि एंड क्वेश्चन भी पचारे एनिमल सेल रे एनिमल बॉडी रे ग्लूकोज टा को फॉर्म रे स्टोर रे ग्लाइकोजेन सेकंड ऑप्शन थिला लिवर इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया आमे जानि छै गोटे यूरिया साइकिल हुए मन थिबो समस्तिंगर आई थिंक यूरिया साइकिल गोटे न थाए यूरिया साइकिल रे बेसिकली कोन हुए ना लिवर रो फंक्शन आ गोटे भी अमोनिया को यूरिया रे कन्वर्ट करे अमोनिया को यूरिया रे कन्वर्ट करिए अमोनिया टा होचे हाईली टॉक्सिक एंड अमोनिया टा एलिमिनेट होवा पई लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी दरकार सो दैट जेतिक सब एक्वाटिक एनिमल्स माने रहिले बा डीप वाटर रे जो माने रहउचंदी से माने होचंदी अमोनिया को रिलीज करंती एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सो दैट से माने को अमोनोटेलिक एनिमल को आ जाए अमोनोटेलिक अमोनिया को अमोनोटेलिक एनिमल्स दोज एनिमल्स which produced ammonia as the excretory product because for the excretion of ammonia there is a large amount of water is required so जो माने deep water रहंती से माने ही अमोनिया को प्रोडक्शन करंती so liver रो फंक्शन थाए कोन ना अमोनिया को यूरिया रे कन्वर्ट करि परिया जेहेतु अमोनिया टा हाईली टॉक्सिक एंड यूरिया टा होची लेस टॉक्सिक सो आमे कहि परिया अमोनिया को यूरिया रे कन्वर्ट करिया रे फंक्शन होची आल्सो लिवर रो जोटा कि यूरिया साइकिल बोली भी कहि परिया यूरिया साइकिल occurs on the liver and in the urea cycle the ammonia produce the urea clear and toxicity order जदि देखिबा सबुठारु हाईली टॉक्सिक होची अमोनिया तापर होची यूरिया तापर होची यूरिक एसिड जो ऑर्गेनिज्म माने अमोनिया रिलीज करनते ताको हम अमोनोटेलिक जो माने यूरिया रिलीज करनते यूरियोटेलिक जो माने यूरिक एसिड रिलीज करनती यूरिकोटेलिक जस्ट 1 सेकंड जो माने अमोनिया रिलीज करनती से मानु हमें कहउचे अमोनोटेलिक and the organisms which are responsible for the release of urea and called as ureotelic and the organisms which will release the uric acid called as uricotelic uricotelic ammonotelic clear तो एई भले ऑप्शन थिला एनडीए रो गोटे क्वेश्चन थिला जोते कि लिवर को नै कि कोटा इनकरेक्ट पचातला तो ऑब्वियसली लिवर रे ग्लूकोज टा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन 100% परफेक्ट जोटा कि हमें ग्लाइकोजेनेसिस बोली कहउचे ग्लाइकोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन फ्रॉम द ग्लूकोज तो ग्लाइकोजेनेसिस लिवर रे हुए सो दैट लिवर गोटे स्टोरिंग ऑर्गन वाला काम करे एंड आल्सो लिवर रे अमोनिया टा यूरिया रे कन्वर्ट हुए एंड आल्सो लिवर आरबीसी रो डिस्ट्रक्शन बा आरबीसी को एलिमिनेट करे भी हेल्प करे हैला एवडा थिला आज क्वेश्चन गुड इवनिंग रंजिता चलो तो वर्तमान पे हमें जीवा हार्ट रो स्ट्रक्चर एंड हार्ट रो फंक्शन रे हैला तो वन बाय वन हमें डिस्कशन करबा तो चलो आम टॉपिक को स्टार्ट करिवा एमडी कौशर सोनालिसा संस्थिता तृप्ति चलो तो हार्ट ह्यूमन हार्ट जोटा कि हमें दिल बोली कहउचे सो ह्यूमन हार्ट अप्रोक्सीमेटली वेट होची 300 ग्राम तो ह्यूमन हार्ट जदि हमें बेसिकली देखिया इट इज द मेजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन जेतोले एम्ब्रियोनिक स्टेज रे हमें थाए सेतोले तीनटा जर्मिनल लेयर थाए वन इज एक्टोडर्म अनदर वन इज मेसोडर्म and the last one is endoderm so strictly you have to remember heart is the mesodermal derived organ clear and it is situated in the thoracic cavity between the two lungs slightly tilted towards the left जदि हमें lungs देखिबा तो lungs रो लेफ्ट आडी के टिकल tilted हेची and heart रो shape just एम्ति लाइक नो heart रो shape थोड़ी हे बडा heart रो shape होची just like clenched fist बा जो गोटे मुठा करी आंगुठी को the size of a clenched fist तो एई भला मुठा भला साइज हो एंड हार्ट रो लोकेशन जदि हमें देखिबा बुक रे तो देइछि स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट बा जदि हमें लंग्स रो स्ट्रक्चर करबा तो लंग्स रो टुवर्ड्स द लेफ्ट आडी के टिके टिल्टेड हेछि बट एनाटॉमिकली जदि हमें देखिबा तो दैट इज हार्ट इज सिचुएटेड कंप्लीटली बिटवीन द टू लंग्स तो जीवा तो एनसीईआरटी अनुसार मन रखिबो क्वेश्चन हार्ट इज मेसोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन and is situated in the thoracic cavity in between the two lungs slightly tilted towards the left most important it has the size of a clenched fist anguti ki mutha kale jo bala sei type ro it is protected by the double wall membranous bag called as pericardium most important the
out. For example, this is the heart, for example, and the covering of heart is called as pericardium. Suppose this is the covering of heart and it is called as pericardium. And already you have an information about the pleural membrane. Pleural membrane में जानिचे, the covering of the lungs is called as pleural membrane and the covering of heart is called as pericardium. Clear? You have to remember this term. Pericardium is the double wall membranous bag, that is which is important for the protection of heart. Clear? Sir, more भी 300 ग्राम. Rome gaming, yes, Rome gaming is your regular student and also MD Kausar a regular student, and there are so many students are here who are joining regularly like Trupti online student, Sanstita online, Sonalisa, Tanmoy. Okay, ठीक ଅଛି चलो तो मन रखिबो. नेक्स्ट जीवा हार्ट होची पेरिकार्डियम. देन आमे जेमति पढितिले लंग्स रो चारिपटे जेमति प्लूराल मेम्ब्रेन अछि एंड प्लूराल मेम्ब्रेन भितरे प्लूराल फ्लूइड थाए. तो जस्ट लाइक आमे ये पढितिले ना, लंग्स रो चारिपटे डबल वाल रो प्लूराल मेम्ब्रेन थाए एंड प्लूराल मेम्ब्रेन भितरे प्लूराल फ्लूइड थिला. जस्ट लाइक सेमति मन रखिबो, हार्ट रो आउटर कवरिंग को पेरिकार्डियम कहै जिवो डबल वाल रो, एंड पेरिकार्डियम भितरे जो फ्लूइड थाए ताको आमे कहि परिया पेरिकार्डियल फ्लूइड. क्लियर? प्लूराल फ्लूइड एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड सेम जिंसो. yes, covering of the liver is Glison's capsule. Glison's capsule हैला. Glison's capsule is the covering of liver, so that pericardial fluid. Our heart is 4 chamber. Already हमें ए विषय भी information नहीं छे. That is fish मानकर heart केते chamber? Fish मानकर 2 chamber heart. Amphibia and reptiles मानकर 3 chamber heart. But reptiles भितर exception थिला crocodile and birds, mammals, crocodile एमानकर 4 chamber heart. As you know that जो मानकर 2 chamber heart से मानकर single circulation, and the organisms who are having the 3 chamber heart से मानकर incomplete double circulation, and जो मानकर 4 chamber heart से मानकर double circulation. Clear? इतना आइडिया तो थिबो ना. फिश मानकर 2 chamber heart single circulation, reptiles and amphibia and reptiles 3 chamber heart incomplete double circulation, birds and reptile exception गोटे थिला crocodile and mammals एमानकर 4 chamber heart, so that double circulation. चलो स्पीड ही जाउनी तो जस्ट कंफर्म करो. आई थिंक स्पीड हो नथिबो. yes, Rome gaming perfect. Sonalisa, Chandan, Trupti, Subhangshi, MD Kausar नो सर स्पीड होनी. अंकिता चलो तो नेक्स्ट जीवा. our heart is 4 chamber, 2 relatively smaller upper chamber atria. Suppose this is the structure of heart and suppose this is the atria. तो upper chamber टाको धर हम जतरे atria कहले and lower chamber टाको धर आसुना दी लोअर चैम्बर टाको जदि हमें वेंट्रिकल कहबा तो स्ट्रिक्टली मन रखिबो एट्रिया एंड वेंट्रिकल भितर क्लियरली लिखा हिची टू रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर एज कॉल्ड एज एट्रिया. माने अपर चैम्बर जो देखिबा दैट इज एट्रिया एंड लोअर चैम्बर जो देखिबा दिस वन इज एट्रिया, दिस वन इज वेंट्रिकल. तो हमें कहि परिया 2/3 ऑफ हार्ट इज वेंट्रिकल एंड 1/3 ऑफ हार्ट इज एट्रिया. माने 3 भाग रो 2 भाग वेंट्रिकल एंड 3 भाग रो गोटे भाग होची एट्रिया. एंड एट्रिया रो स्पेस होची स्मॉल एंड वेंट्रिकल रो स्पेस होची लार्ज. 2 लार्जर एंड लोअर चैम्बर इज वेंट्रिकल. ठीक अछि. 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर बा स्मॉल अपर चैम्बर टा एट्रिया और स्मॉल इन साइज एंड लोअर चैम्बर टा होची लार्ज जोटा कि हम कहूचे वेंट्रिकल. क्लियर? एट्रिया वेंट्रिकल गला. देन देखिबा टिके जदी जस्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल रो टिके तार वाल देखिबा तो एट्रियल वाल और वेंट्रिकुलर वाल भितरे
देखो जो वेंट्रिकल वाल रहलानी एटा होची टिके थिकनेस अधिका तो wall of the thickness of the ventricular wall is more than the atrial wall तो यदि हम देखिबा थिकनेस को वाल रो थिकनेस अधिका ventricle wall रो thickness more than the atrial wall हैला ventricle wall रो thickness is more than the atrial wall clear and एटा होची 2/3 this one 1/3 clear देन देखिए आट्रिया को सेपरेट करथवा सेप्टम दीटा ए जो हमर आट्रिया रहला आट्रिया को सेपरेट जे करे दैट इज हमें ता कहबा सेप्टम माने बुझि पाछो त हमर नोज को जेमति दीटा सेपरेट करछि सेप्टम तो जस्ट लाइक तो आट्रिया को सेपरेट करछि इंटर आट्रियल सेप्टम बा शॉर्टकट रे हम लिख परिया आई ए एस क्लियर सेम वेंट्रिकल को जे सेपरेट करछि तक हमें कहि परिया कोन दैट इज इंटर ventricular septum clear कहीं ना 4 चैम्बर हार्ट हमर ना तो नियति में 4टा चैम्बर होबा दरकार तो आर्टरिया को सेपरेट करछि इंटर आर्टरियल सेप्टम वेंट्रिकल को सेपरेट करछि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेम हमें जो देखिबा इंटर आर्टरियल सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भितरे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम रो थिकनेस टा टिके अधिका जेमति वेंट्रिकुलर वाल रो थिकनेस टिके अधिका सेमति इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम रो थिकनेस भी टिके अधिका तो क्लियर तो क्वेश्चन जदि पचारिबो that is the two atria or the right atria and the left atria are separated by the septum called as interatrial septum and the ventricles are separated by the septum are called as interventricular septum clear for example interatrial septum interventricular septum देन हमें करि परिया तो वर्तमान पई कोटा राइट एट्रिया कोटा लेफ्ट एट्रिया दिस इज राइट एट्रिया दिस इज लेफ्ट एट्रिया दिस वन इज राइट वेंट्रिकल दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल क्लियर इंटरएट्रियल सेप्टम आईएएस एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तापर देखिया बोथ साइड एट्रिया और वेंट्रिकल को देखो केवल आट्रिया को सेपरेट करथिबा सेप्टम को हमें कहले इंटरएट्रियल सेप्टम केवल वेंट्रिकल को सेपरेट करथिबा सेप्टम को हमें कहले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बट आट्रिया एंड वेंट्रिकल ए जोटा को कह जाय दिस वन कॉल्ड एज आट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम आट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बा जहा को हमें कहि परिबा एभी सेप्टम क्लियर तो तुमको ये तीनटा सेप्टम ने क्वेश्चन पचाले आराम से आसीबो फॉर एग्जांपल तुमको क्वेश्चन पचाला इंटर आट्रियल सेप्टम कहा को सेपरेट करछि ऑप्शन थिबो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया तो को बेसिकली कोटा को सेपरेट करछि इंटर आट्रियल सेप्टम interatrial septum will separate right atria right ventricle left atria left ventricle right atria right ventricle left atria तो कोन हो interatrial septum टा कहा को सेपरेट करछि आंसर कोन हो right atria voice of krishna perfect that is right atria and left atria where is option right atria and left atria right atria and left atria I think option is now right atria and left atria clear then interventricular septum कहा को सेपरेट करिवो right ventricle and left ventricle and both side atria ventricle को सेपरेट करिवो किए atrioventricular septum clear आपने दिए नहीं yes sorry options was not there so that okay the interatrial septum interventricular septum atrioventricular septum then 2/3 heart कोटा larger space कोथरे अछि ventricle ना atria रे
एंड को चैम्बर थिकनेस अधिका ये सब गला ठीक अच्छे तापर जीवा नेक्स्ट फॉर एग्जांपल to same are connected the opening between the right and left heart is guarded by the valve okay so next जीवा suppose this is the heart and suppose this is the right atria and this is the left atria and this is the right ventricle and left ventricle clear so that हमको गोटे कथा मन रखिया पड़िबो हाँ अच्छा जदि देखिबा सब चैम्बर जति रहले among the four chamber of heart को चैम्बर टा maximum space in which chamber of heart among the four chamber heart रो सबुठारो maximum space को chamber रे अछि and the answer is left ventricle देखो क्लियरली मन रखियो सेप्टम टा एमती ही जाए এই টাইপ रो तो टिके तेरछे की तो सबुठारो मैक्सिमम स्पेस होची लेफ्ट वेंट्रिकल रो क्लियर हला सबुठारो लेफ्ट वेंट्रिकल हला रोम गेमिंग लेफ्ट वेंट्रिकल क्लियरली मन रखियो मैक्सिमम स्पेस होची लेफ्ट वेंट्रिकल ने बहुत क्वेश्चन पचारे हम पढ़िया तो निहात रूप से सबुठारो मैक्सिमम स्पेस होची लेफ्ट वेंट्रिकल रो मन रखिया देन होची राइट वेंट्रिकल देन राइट एट्रिया देन लेफ्ट एट्रिया क्लियर चलो तो वर्तमान में हमें देखिए valve related this is the heart so here is right atria right ventricle left ventricle तो मन रखिया कौन ना right atria and right ventricle भितरे there is a valve is present and जहाँ को हमें कहि परिया ट्राइकस्पिड भाल्व ठीक अच्छे तो क्लियरली मन रखिबा ट्राइकस्पिड भाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल सेम लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल भितरे द भाल्व व्हिच इज इट इज बाइकस्पिड bicuspid valve present between the left atria and the left ventricle and the tricuspid valve is present between the right atria and the right ventricle clear and also मन रखियो bicuspid valve is otherwise called as mitral valve bicuspid valve is otherwise called as mitral valve क्लियर तो सही कथा लिखा है जदि हम देखिबा टिके इनसेट रीडिंग कर दबा हां तो ए थीन लिखा है क्लियरली मन रखियो थीन मस्कुलर वॉल कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम ता माने इंटर एट्रियल सेप्टम ता थीन इन नेचर हला सेति पई म कहली इंटर एट्रियल सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इंटर एट्रियल सेप्टम थीन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ता थिक तो से कथा लिखा है थीन मस्कुलर वॉल कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम व्हिच इज सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया क्लियर same whereas the thick you have to remember here it is mentioned thick thick walled the interventricular septum separate the left and the right ventricle clear the atria and the ventricle of the same side ro atria and ventricle को separate करछि के by a thick fibrous tissue called as atrioventricular septum तो मन रखिबो interatrial septum this is a muscular layer इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जी की राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट करछि एट्रिया एंड वेंट्रिकल सेपरेट करछि थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम हैला तो देन होछि से कथा लिखा है हाउएवर ईच ऑफ दिस सेपरेट प्रोवाइडेड विथ एन ओपनिंग थ्रू ए टू चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द valve that is three muscular valves ठीक है एटा मन रखिबो three muscular valves or cusps the tricuspid valve where is a bicuspid valve
तो मन रखिबो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड भाल्व आर मस्कुलर इन नेचर। तो क्वेश्चन पचारि परिबो ट्राइकस्पिड भाल्व बाइकस्पिड भाल्व मस्कुलर ना फाइब्रस। सो यू हैव टू रिमेंबर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड भाल्व आर मस्कुलर भाल्व। क्लियर? मस्कुलर भाल्व एंड मन रखिबो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम टा गोटे फाइब्रस। क्लियरली इट मेंशन कराइछि। वन सेकेंड एटा लिखि दोछि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इट इज ए फाइब्रस। ठीक अछि। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इट इज ए फाइब्रस टिश्यू, थिक फाइब्रस टिश्यू। तो इंटरएट्रियल सेप्टम टा होछि थिन, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टा होछि थिक एंड दीटा को मस्कुलर, बट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इज फाइब्रस टिश्यू एंड मन रखिबो दैट इज एमाने होचंदी सब मस्कुलर फ्लैप की ना ट्राइकस्पिड भाल्व एंड बाइकस्पिड भाल्व। एंड ट्राइकस्पिड भाल्व कोठी लोकेशन बिटवीन द राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एंड बाइकस्पिड भाल्व प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? बाइकस्पिड भाल्व इज अदरवाइज कॉल्ड एज मिट्रल भाल्व। बुझी होची ना बुझी पारनो? यस रोम गेमिंग भलो अछि। चलो आगु जे तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड भाल्व गला तापर हम जीवा वर्तमान में हार्ट रो स्ट्रक्चर को नेकरी। ओके तो हमरो बेसिकली हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल एटा तमु जणा अछि। वन सेकेंड एडी सिलेक्ट। तो चलो ए डायग्राम गोटे करिया। सपोज मन रखिए सपोज दिस इज द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट रे सपोज तो मन रखिबो दैट इज गोटे नोडल टिश्यू एटी प्रेजेंट थाए। एटा राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियरली मन रखिबो ह्यूमन हार्ट को कहा जाए मायोजेनिक इन नेचर। दी प्रकार हार्ट थाए गोटे मायोजेनिक हार्ट एंड अनदर वन इज न्यूरोजेनिक हार्ट। Who can say what is myogenic heart and what is neurogenic heart? कि कहि परिबो myogenic heart कोन and neurogenic heart कोन? को neurogenic heart कोन myogenic heart कोन? Yes, right. मैम आपन टिके पर कॉल करची क्लास रे। तो हबो मायोजेनिक हार्ट एंड न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट कोन? दैट इज गोटे निजर गोटे स्पेशलाइज टिश्यू थाए बा हम जा कोइ पर नोडल टिश्यू कोइ पर बा गोटे निजर गोटे मस्कुलर टिश्यू थाए। बट न्यूरोजेनिक हार्ट टा नर्व द्वारा ही रेगुलेट हुए। जेमति कि हम जेमति कि भाबी बारिया सिलेंडर एटा हो जेति कि सब लोअर इन्वर्टिब्रेट रहिले लोअर इन्वर्टिब्रेट मानकर हार्ट होची सब एक कोन ना न्यूरोजेनिक। कॉकरोच फॉकरोच आर्थ्रोपोडा जो मान रहिले बा लोअर इन्वर्टिब्रेट से मानकर होची न्यूरोजेनिक हार्ट। बट मोलुस्का एंड हमर ह्यूमन बीइंग्स मैमल्स तो एमानकर हार्ट होची दैट इज रहबो मायोजेनिक बा एमानकर हार्ट को रेगुलेट करिया पई नर्व इंपल्स के लिए न्यूरोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक कंट्रोल बाय द ब्रेन डोंट कंट्रोल बाय द ब्रेन। यस संस्थिता दैट इज जो मानकर हार्ट को ब्रेन रेगुलेट करि परिबोनी दैट इज मायोजेनिक हार्ट एंड हम मानकर हार्ट होची मायोजेनिक हार्ट। एंड हम मानकर राइट एट्रिया जो देखिबा देयर इज ए स्ट्रक्चर और देयर इज ए नोडल टिश्यू दैट इज जाको हम कहि पारे एसए नोड। व्हाट इज एसए नोड? साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल को नोड कोन जहा को हम कहि पारे साइनो एट्रियल नोड बा एसए नोड को कह जाय हार्ट ऑफ द हार्ट। हार्ट ऑफ द हार्ट। हार्ट रो हार्ट कह जाय
बिकॉज इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कोई करे ना एसए नोड तो एसए नोड को लेके हम ये मन रख परिया एसए नोड इट इज ए टाइप ऑफ नोडल टिश्यू जे कि बेसिकली आकु कह जाए हार्ट ऑफ द हार्ट ऑफ हार्ट देन कोठी एसए नोड रो लोकेशन मन रखिबो एसए नोड रो लोकेशन आकु नै कि नीट रे क्वेश्चन पचार जी एंड आल्सो जो देखिबा एम्स रे जेतोले सेपरेट एग्जाम हुए एम्स रे भी क्वेश्चन पचार छी एसए नोड रो लोकेशन कोठी तो स्ट्रिक्टली मन रखिबो एसए नोड रो लोकेशन राइट एट्रिया प्रेजेंट अछि सो मन रखिबो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया तो राइट एट्रिया राइट अपर कॉर्नर लोकेटेड अछि एसए नोड क्लियर सो यू हैव टू रिमेंबर राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया रे एसए नोड लोकेशन अछि तो एसए नोड रो बेसिकली इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करे क्लियर तो कह जाए कि हार्ट जी इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करे बेसिकली से इलेक्ट्रिक गोटे 100 वोल्ट रो ये लगी परियो बॉल लगी परियो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया हैला तो देखिबा मोस्टली रिलेटेड कौन कौन कथा अछि तापर हम आगु को जिया ओके चलो तो कौन ना द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल यस राइट एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल एज यू नो दैट केते टाइप रो मसल अछि स्केलेटल मसल स्मूथ मसल स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल तो मते आ भितर को स्केलेटल मसल स्मूथ मसल कार्डियक मसल भितर को मान होचंदी स्ट्रेटेड लाइक अपीयरेंस एंड को मान नॉन स्ट्रेटेड अपीयरेंस किए एंड नॉन स्ट्रेटेड अपीयरेंस किए स्ट्रेटेड माने जो मसल्स माने को जदि हमें अंडर द माइक्रोस्कोप रे देखिबा तो ताकर छोट सूता गार भलिया देखा जिवो स्ट्रेटेड लाइक अपीयरेंस देखा जिवो तो अमंग द स्केलेटल मसल एंड द स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल straighted appearance are found in which muscle skeletal smooth cardiac muscle so yes the answers are coming from abhismita first answer from abhismita oh sorry sanstita abhismita md kosar ankita and ankita right okay तो आमे जानि छे जदि स्केलेटल मसल को देखिबा आमे द स्ट्रेटेड अपीयरेंस हम पाया कोतरे ना स्केलेटल रे पाया yes skeletal muscle and also cardiac muscle hele skeletal muscle and also cardiac muscle रे पाया and non straighted like appearance कोथरे पाया basically smooth muscle clear skeletal muscle and smooth muscle skeletal muscle टा straighted smooth muscle टा non straighted cardiac muscle टा भी straighted तापर आकु ने कि आउ गोटे क्वेश्चन हम डिराइव करि परिबा द स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल कार्डियक मसल भितरे बेसिकली व्हिच मसल्स के होची वॉल्यूंटरी एंड के होची इनवॉल्यूंटरी वॉल्यूंटरी के एंड इनवॉल्यूंटरी के तो व्हिच मसल इज वॉल्यूंटरी नेचर एंड व्हिच मसल इज इनवॉल्यूंटरी नेचर yes कोन हबो को वॉल्यूंटरी माने कोन हमें जानि छे ऑलरेडी वी हैव एन आईडिया अबाउट द वॉल्यूंटरी माने हमें निजे से मसल को चाहिले कंट्रैक्शन करि परिया रिलैक्सेशन करि परिया फॉर एग्जांपल सपोज मुठी ठिया छि एंड आई वांट टू कंट्रैक्ट माय हार्ट मसल और कार्डियक मसल मु जदि मो हार्ट मसल को कंट्रैक्ट करे चाहिबी इज इट पॉसिबल टू कंट्रैक्ट माय हार्ट मसल ऑब्वियसली आंसर इज नो बिकॉज़ मु जेमति चाहिबी मो हार्ट मसल को सेते बड़ करि परिबिनी कंट्रैक्ट करी बट इफ I will want to contract my skeletal muscles like biceps, chest, shoulder. So obviously I can increase the shape of the skeletal muscles by the workout. तो इतनी मन रखिया अछि skeletal muscle is voluntary nature. It is voluntary. That means it is under the control of your central nervous system. तम central nervous system under रे इटा अछि. This is the it is control under your CNS central nervous system that is brain and spinal cord but
the smooth muscle and the cardiac muscles are non-voluntary because these muscles are not not under the control of your central nervous system. Clear? Okay. तो जीवा बढ़िया तो आपको नहीं करी ये थिला मसल्स तो तमर चैप्टर अछि लोकोमोशन एंड मूवमेंट सेथिरे मसल्स रो बहुत सारा प्रॉपर्टी थाए जेमति कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स कार मन अछि लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर तुम पढिबो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल्स रो प्रॉपर्टीज कोन एनीवन जेमति इलास्टिसिटी एक्साइटेबिलिटी मन अछि इलास्टिसिटी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एक्साइटेबिलिटी ओके लेट इट चलो लोकोमोशन एंड मूवमेंट रे पढिया तो जस्ट मन रखिया द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल एंड कार्डियक मसल केते टाइप रो इस विषय हम कहिले ओके नेक्स्ट द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द आर्टेरिया देखो स्ट्रिक्टली जेतला हम हार्ट रो स्ट्रक्चर कले सेतोली मु तो कहितली मन रख वेंट्रिकल रो वॉल रो थिकनेस टा आर्टेरिया रो वॉल रो थिकनेस टा अधिका सो एनसीईआरटी टा क्लियरली मेंशन कराइ छला एंड आ गुटे कथा मन रखियो वॉइस ऑफ कृष्णा सुन था सो दैट हम आ गुटे मनले इंटर आर्टेरियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भितरे इंटर आर्टेरियल सेप्टम टा होची दैट इज मस्कुलर वॉल और थिन और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम टा होची थिक आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम टा होची गोटे फाइब्रस रो वॉल क्लियर तो कोटा थिन कोटा थिक को वॉल टा थिक को वॉल टा थिन सेटा मन रखियो देन ए स्पेशलाइज्ड cardiac muscles called the nodal tissue is also distributed in the heart. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called as sinoatrial node SA node को कहा जाए heart of the heart and the most important questions previously पचरा जाइछि that is where is the location of SA node and you have to remember the location of SA node or the sinoatrial node is right upper corner of right atrium clear and another mass of this tissue is seen in lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum called as atrioventricular node just see the diagram suppose this is the heart suppose this is the sinoatrial node and another septum is another nodal tissue is present called as AV node SA node ro full form sinoatrial node AV node ro full form is atrioventricular node atrioventricular node SA node ro location कोठी ना right upper corner of right atria AV node ro location होची lower left corner of right atria clear right upper corner of right atria is the location of SA node and the lower upper corner of the left atria is sorry भूल हैला right upper corner of the right atria is SA node and lower left corner of right atria lower left corner of right atria लिखी छी कि तो आंसर एठी हबो एटा भूल है ए जगह रे नो दिस इज रॉन्ग 1 सेकंड एटा नो बाय मिस्टेक एटा नो हला तो ए जगह रे जस्ट लाइक ए तो लिखी छे ठीक एसए नोड लोकेशन होची राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया एंड एबी नोड लोकेशन होची लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया तो ऑब्वियसली एटा थोड़ी राइट एट्रिया तो राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल सो ए जगह रा तो मन रखिबो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करिवो एसए नोड ला देन एबी नोड तो क्लियरली मन रखिबो दीटा नोडल टिश्यू रो पैच थाए गोटे नोडल टिश्यू रो पैच होची राइट अपर कॉर्नर राइट एट्रिया एसए नोड जे कि इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करिवो एंड इलेक्ट्रिक इंपल्स को मॉडिफाई करिवो बा मोर एम्प्लीफाई करिवो होची एबी नोड पढ़िया से रिगार्डिंग so atrial node and another mass of the tissue or another the mass of the nodal tissue is seen in the lower left corner of a right atrium close to the atrioventricular septum neki close re present अछि clear called as atrioventricular node AV node a bundle of nodal fiber atrioventricular bundle or AV bundle
continues from the AV node which passes through the atrioventricular septum. तो किछि नोडल फाइबर कौन हुए ना एभी नोड रू बाहर की atrioventricular septum दे की कंटीन्यूअस होती क्लियर मन रखिलो द क्लियर लिखा है बंडल ऑफ नोडल फाइबर atrioventricular बंडल जोटा हम एभी बंडल बोली कहूचे continues from the AV node रू कंटिन्यू हेकी which passes through the atrioventricular septum to emerge on the top of the inner ventricular septum. Clear? Inner ventricular septum and immediately divide into the right and left bundle. Right bundle and left bundle. तो मन रखिया जेतले इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसमिशन हुए तार पाथटा कोन पाथटा होची कोन ना फास्ट होची एसए नोड रू एबी नोड रू एबी बंडल और ताको हम बंडल ऑफ हीज कहि परिया देन दैट इज पर्किंजी फाइबर जेतले राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल हे गला तो आदरु छोट नोडल फाइबर गुडा ओरिजिनेट होती जहा हमें पर्किंजी फाइबर बोली कहि बाय द साइंटिस्ट ताको नाम थिला पुरकिंजी एंड सी जेतु डिस्कवर करथिले सो ताको नाम अनुसार दैट इज पुरकिंजी फाइबर हला मन रखिबो कि इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करे एंड एवी नोड एसए नोड एंड एवी बंडल पर्किंजी फाइबर ऑर्डर कोन तापर हमें नेक्स्ट स्टेप पढिया एई पर्यंत बुझियला ना बुझियलानी बुझियलानी हला बंडल ऑफ हीज को तुम एवी बंडल बोली कहि परियो एसए नोड देन एवी नोड रो एवी बंडल और बंडल ऑफ हीज देन पर्किंजी फाइबर ठीक अच्छी अकॉर्डिंग द साइंटिस्ट और द डिस्कवर करथिले पर्किंजी बोली साइंटिस्ट और तांको नाम अनुसार पर्किंजी फाइबर हला एवी बंडल जहा बंडल ऑफ हीज है बुझेला ना बुझेलानी अभिस्मिता सोनालिसा शुभांशी वॉइस ऑफ कृष्णा संस्थिता यस चलो नेक्स्ट जीवा तो मन रखिबो वेयर इज द एसए नोड लोकेशन एंड दीज आर द नोडल टिश्यू एसए नोड रो एवी नोड रो बंडल ऑफ हीज रो पर्किंजी फाइबर क्लियर हला नोडल टिश्यू कोन नोडल टिश्यू होची गोटे टाइप ऑफ टिश्यू जोटा की बेसिकली कार्डियक मसल रे देखा जाए बा हमर जो हार्ट रो जो मसल रहला बेसिकली नोडल टिश्यू जे टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट इज इन the cardiac muscle and as you know that cardiac muscle only and only found in the heart wall or the heart cell so that we can say that nodal tissue so SA node ho AV node ho bundle of His ho Purkinje fiber ho eman so nodal tissue ko neki theory and SA node ta electric impulse generate karibo then the electric impulse will transport to the AV node and AV node taku there is more amplify karibo then it will go that is गोटे बंडल भलिया जीवो से that is node जो नोडल टिश्यू रो गोटे बंडल जोटा की इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दे की जीवो जहा को हम एवी बंडल बोली कहूचे देन बंडल टा राइट को जीवो एंड लेफ्ट को जीवो राइट एवी बंडल लेफ्ट एवी बंडल तापर छोट पर्किंजी फाइबर लाइक नोडल टिश्यू तातिर बाहरिबे ताको हम पर्किंजी फाइबर बोली कहबा क्लियर नेक्स्ट जीवा These branches gives rise to minute fiber throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called as Purkinje fiber or by the scientist discovered Purkinje clear and these fibers along with the right and left bundle is called as bundle of His कहा कहा जाए basically ये जो हमारा Purkinje fiber these fibers माने Purkinje fiber and with PF लिखि दोजी Purkinje fiber plus along with the right and left bundle right AV bundle that is right AV bundle plus left AV bundle आको हम कहि परिया कोन ना bundle of His तो AV bundle कहबा जहा bundle of His कहै से AV bundle is made up of right AV bundle and left AV bundle एंड पर्किंज फाइबर सब से नोडल फाइबर को नहीं थियरी बंडल ऑफ हिज हैला तो एठी भी एनसीईआरटी लिखि देछि तो जदी कंफ्यूजन होबार अछि बंडल ऑफ हिज कोन पर्किंज फाइबर बट एवी बंडल जहा बंडल ऑफ हिज सेया फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स एंड कॉल्ड एज पर्किंज फाइबर
These fibers along with the right and left bundle are known as bundle of His. The nodal musculature has the ability to generate the action potential without any external stimuli. ସେଥିପାଇଁ ତ that is କୌଣସି external stimuli ଦରକାର ନାହିଁ human heart ଯଦି ଗୋଟେ pump ହୁଏ just ଏଇଆ ଭାବ ଯଦି human heart ଗୋଟେ pump ଭଳିଆ କାମ କରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ that is heart is just like a pumping organ. So let's see human heart is just like a pump. तो पम्प को स्टार्ट करिया पई कोनोसी बाहरु किछि केही दरकार नाही ह्यूमन हार्ट को बा ह्यूमन रो जो पंप नाम पंप जदि भाबिबा तो ताको स्टार्ट करिया पई ता पाखरे निजर ही गोटे स्विच अछि एंड दैट स्विच इज एसए नोड. So SA node has the capacity to start the pump or to start the heart, so that SA node is called as heart of heart. ठीक अछि. So the clearly it is mentioned here, the nodal musculature has the ability to generate the action potential without any external stimuli, that it is auto excitable. However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at a different part of the nodal system. The SA node can generate the maximum number of action potential, and that is 70 to 75 times. आमे जानि छे that is every minute रे 70 to 75 times बा approximately 72 times. तो जेते थर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करिवो सेते थर हार्ट बीट करिवो. सो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट फॉर इनिशिएटिंग द मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रास्ट ऑफ द हार्ट, देयरफॉर द कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट. जेहेतु रिदमिटिसिटी को मेंटेन करूची सो दैट एसए नोड को हमें आल्सो पेस मेकर ऑफ हार्ट बोली कहि परबा. तो निहात रूप एसए नोड को एई बळा क्वेश्चन पचारि परिबो. सो निहात रूप मन रखिबो एसए नोड इज अदरवाइज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट. And where is the location of SA node? Right upper corner, right atrium. Why the SA node is called as the heart of heart? Strictly we have to remember SA node is made up of the nodal tissue, or it is a type of nodal tissue, and which has the capacity to generate the action potential, and there is no external stimuli is required to initiate the pump, just like the heart. Jodi heart ko pump boli bhabiba, so there is no requirement of any external stimuli to start the heart or to start the pump. So that jodi human heart would pump way and the switch is SA node, which is made up of the nodal tissue, and the location is right upper corner, right atrium, and it is called as the heart of the heart. Also it is called as the pacemaker of heart, and the normal heartbeat per minute, that is 72 times average, but the value or the interval is 70 to 75. It is clearly mentioned in your NCERT. So you have to remember that is the range is 7 to 75 times, and but the average is 72 times. Clear? I think समस्त को बुझा पड़तियो. तृप्ति, MD कौशर, अभिस्मिता, loyal friend tutorial. Yes, loyal friend tutorial, that is sir हमरो. And जदि किए भी life science regarding that is जो माने PG level हो, PhD level हो, जदि पढ़िया पे interested थिबे then sir अंकर channel, that is loyal friend tutorial. So ए related बुझेला एको नै कि आराम से जहा क्वेश्चन पचरे आसीबो जेते थोड़ा एक्शन पोटेंशियल जेते जनरेट हबो and सेते टाइम that is हमर हार्ट बीट करियो. Clear? And our heart normally beats 70 normal. For example, suppose आमको जदि किए गोटे गोड़ौची तो सेई टाइम रे तो नॉर्मल हार्ट बीट तो 72 ना पूरा बढ़ी कि जाई कि 82 टाइम्स हे जो. तो हार्ट बीट एंड मते इट सिंपली क्वेश्चन पचरिया व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल टू इंक्रीज द हार्ट बीट, एंड ऑप्शंस आर adrenaline, oxytocin, thyroid stimulating hormone, prolactin hormone, luteinizing hormone. Which hormone is directly impact on the heartbeat? And the answer is adrenaline, right? Adrenal gland, which is responsible for the release of adrenaline hormone, and during the secretion of adrenaline hormone the heartbeat will gradually increase. Clear? Yes. So that is हम पढ़िया तो nervous system पढ़िया, central nervous system and the peripheral nervous system. So peripheral nervous system is again divided into sympathetic and the parasympathetic. So which one is responsible? Second question is, among the sympathetic and the parasympathetic nerve fiber, which one is important to increase the heartbeat and which one is important to decrease the heartbeat? Among the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system, which one is responsible to increase the heartbeat? Anyone?
आमे जानिछे नर्वस सिस्टम दैट इज नर्व and brain and spinal cord all together comprises of nervous system, and nervous system are two types: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is brain and spinal cord, and the peripheral nervous system which is situated in the periphery of brain and spinal cord. Sensory neuron is there, motor neuron is there, sympathetic and parasympathetic is there. So parasympathetic increase and sympathetic decrease. Answer ko, among the sympathetic and parasympathetic, which one is responsible to increase the heartbeat? Oh, देखिए कार कर ठीक है उसकी. Yes, and the answer is sympathetic is directly responsible to increase the heartbeat. And yes, right, Vinay Prasad, parasympathetic is important to decrease the heartbeat. Perfect. Parasympathetic nervous system is important to decrease the heartbeat, and sympathetic nervous system is important to increase the heartbeat. Okay. So, हमें that is human heart को कौन पे double circulation को जाए, and basically what is systemic circulation, what is pulmonary circulation, and how the double circulation occurs. Then everything next class रे पढ़ेया, but आज जेती की पढ़ेले ताकू आमे बेसिकली डिस्कशन करिया तार एमसीक्यू क्लियर. बाकी हमर पैटर्न ही है जहां हमें पढ़ेया ताकू एमसीक्यू रे ही डिस्कशन करिया. सो नाउ कम टू द एमसीक्यू सेशन. चलो, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द एमसीक्यू डिस्कशन, राइट? शुभंशी, अंकिता. यस सर, ब्लड 2 बार पास करता है इसीलिए डबल सर्कुलेशन, राइट? परफेक्ट. दैट इज यदि हमें देखिबा, सपोज ह्यूमन हार्ट इज ए पंप, एंड जेतरा हमें पढ़िबा डबल सर्कुलेशन, that is two times blood will enter to the heart. Padhiya, that is one time blood will exist from the heart, and the other time blood will entry two times. So dekhiba how the, why the circulation of human circulation or the four chamber heart circulation is called as double circulation, se bisare padhiya. But now come to the MCQ discussion, right? Chalo, आई होप कि तुम मैंने एंजॉय करथिबो. थैंक यू आद्याशा, दैट इज मु तुम मेसेज पढ़ी. नेक्स्ट जीवा एमसीक्यू, राइट? जस्ट वेट 1 minute. And the first question is, lymph differs from the blood: absence of RBC, excess of water, absence of a WBC, absence of protein. Lymph differs from the blood: absence of RBC, excess of water, absence of WBC, absence of protein. कौन अब आंसर को?
सुना हो ना नहीं आरबीसी के एब्सेंस के लिए राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द कार्डियक impulse is initiated and conducted further up to the ventricle the correct sequence of conduction of impulse is what is the correct sequence and I am writing the options are I think there is no requirement of options for you the SA note Purkinje fiber AV node and AV bundle then answer kono what is the correct order of the conduction of impulse yes MD Kausar I am repeating the questions the cardiac impulse is initiated and conducted further up to the ventricle the correct sequence of a conduction of impulse SA node right then AV node then AV bundle and Purkinje fiber right then how do the parasympathetic neural signal AIPMT 2014 question AIPMT 2014 how do parasympathetic neural signal affect the working of heart reduce the heartbeat reduce the heart rate को increase करे आंसर कौन हबो यस कौन हबो एंड ऑप्शन एमती देछि रिड्यूस द हार्ट रेट इंक्रीज करे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करे कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करे ए बी सी डी तो ए एंड सी करेक्ट ना ए एंड डी करेक्ट मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर सो कौन हबो क्लियरली मन रखियो रिड्यूस द हार्ट रेट एंड आल्सो रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट पढ़िया हमें कार्डियक आउटपुट कौन बट जस्ट सिंबॉलिक हो जाए कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम then agranulocytes are responsible for the immunoresponse agranulocytes are responsible for the immunoresponse options are basophils को agranulocytes टा immune system पाई responsible basophils eosinophils neutrophils lymphocyte among which one is a agranulocytes and responsible for the immune system more MCQs on demand sir yes Adesh 100% I will give you more MCQ from the next class चलो कौन हबो agranulocytes रे की आको भीतर गोटे agranulocytes and important for the immunity system yes answer is lymphocyte and lymphocyte is again divided into B and T then heart is covered by pericardium pleural membrane visceral membrane peritoneum heart is covered by आउ दी चारटा क्वेश्चन पचारे देन क्लास को एंड करिया एत्ते किछि आदर क्वेश्चन नाही yes then गोटे क्वेश्चन को तो पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट ऑब्वियसली आसीबो एसए नोड एबी नोड ट्राइकस्पिड वाल्व एसपी वाल्व व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट द रिलेटेड तो वेयर इज द ट्राइकस्पिड वाल्व इज लोकेटेड where is the tricuspid valve is located and where is the bicuspid valve is located and what is the other name of a mitral valve and what मन रखि त tricuspid valve and bicuspid valve close हला बेले the sound lobe will be produced there are two types of heart sounds are produced one is lobe and another one is lobe
but during the closure of tricuspid and bicuspid the higher sound lobe will be produced ହେଲା yes चलो तो ये आम एंड करिया तो 1 आवर पाखापाखि हो गलानी देन नेक्स्ट क्लास अच्छी ऑनलाइन रे सो निहत रूप से नेक्स्ट क्लास रे एगेन आम टॉपिक को आनिक डिस्कशन करिया एंड भलसे सारा पर एमसीक्यू डिस्कशन करिया 1 आवर क्लास होची सो दैट निहत रूप से आम 1 आवर रे विदाउट एनी रेस्ट रे ही क्लास करछे एमती नाही कि क्लास रे आम गपी गपी टाइम जाउची तो निहत रूप से जेहेतु आम विथ रेस्टलेस रे क्लास करछे एंड 1 आवर जाउची तो 1 आवर इज सफिशिएंट सो नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन है यस एमडी कौशल एक डाउट है पूछो आपका डाउट क्या है शुभांशी संस्थिता अंकिता एंड मेनी थैंक्स ऑल ऑफ यू चलो जो मैंने ऑनलाइन क्लास अच्छी ऑनलाइन क्लास जॉइन करो एंड नेक्स्ट क्लास रे देखा हो वॉइस ऑफ कृष्णा थैंक यू आद्याशा यस आद्याशा थैंक यू दीप्तिमयी चलो कहाँ पूछूं आप मुझे कॉल कर सकते हो और आप कमेंट में भी पूछ सकते हो चलो